Hey guys, what's up? Welcome to the new stream. So in this today's session, we are going to see BTC, gold, US oil, US tech, US 30. And if you want me to analyze Nifty or Indian stocks, you can write down in the chat box. Then I will analyze the same stock. हाँ थोड़ा लेट हुआ. वॉइस आ रहा ना अभी? आवाज़ आ रहा मेरा? So currently BTC is trading around this resistance line, that is 109, and if this resistance level breaks, we can expect a good move on upside. So as you can see in 1 hour chart, there is multiple resistance taking from this trend line. आदिल CR7, वेलकम मेरे भाई. So if you can see the gold is at 3324, and if we see in 4 hour chart, it is consolidating. And if you look at 15-minute chart, you can see this big selling candle, and if it take
support. What will be its retracement level? Let us check. So this is our buying. We need to mark the low to the high, and if we consider this low to this high, and if you draw the fib, you can see the 0.5 and 0.6 level from where there is most probably the market is going to retrace and move upside again. So this is our golden ratio, we call it as 0.5, 0.6 level. From this zone we can see the reversal, and if you go through smaller time frame, you can see this reversal. भाई एक्सनेक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करे, ट्रेड कैसे ले, बेसिक वीडियो बनाओ प्लीज. ओके भाई, श्योर श्योर. एक्सनेक्स में अकाउंट बनाने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ. मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ से लिंक से डाउनलोड करो. उसमें आपको सिर्फ आपका जीमेल आईडी वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है ओटीपी से. उसके बाद आपको कौन सा अकाउंट में ट्रेड करना है वो सेलेक्ट करना है. पहले आप डेमो में प्रैक्टिस करो. आपको डेमो में $10,000 का डेमो करेंसी मिलता है, वहाँ से आप ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो. See, from this zone, whenever you see the retracement, you can plan reversal trades. Okay. See, even though after this big candle, when the market makes some bullish signals, you can plan on buying side. For example, see, what was our previous trend? Our previous trend was buying. See, from this level, we have seen a good buying in the market. Right, this is our uptrend. Now market is taking retracement from this high to this low. Whenever market is taking retracement to our fib zone, that is 0.5 and 0.6 level zone, you should wait and trade for buying side. You should not sell by looking at this red candle. You should trade in the buying direction, because here the dominance of buyers is more than the sellers. So you can turn this into smaller time frame like 5 minutes, and you should wait for a proper entry. So what will be your entry according to this? See, after this red candles we are seeing a green candle, right? So this is called as piercing, bullish piercing. Means for this complete red candle, our green candle has covered more than 50%. सी अभी इस रेड कैंडल को, इसका नेक्स्ट वाला ग्रीन कैंडल, इसका क्लोजिंग से ही ओपनिंग होना चाहिए, और इस कैंडल का बॉडी 50% से अबव क्लोज होना चाहिए. मान लो ये अपना ग्रीन रेड कैंडल है और नेक्स्ट अपना ग्रीन कैंडल, इसका ओपनिंग है रेड कैंडल का. इस रेड कैंडल का क्लोजिंग से ही नेक्स्ट अपना ग्रीन कैंडल ओपनिंग होना चाहिए. जहाँ से रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है वहीं से ग्रीन कैंडल का ओपनिंग, और इसका लेंथ जो इसका 50% रहता है उससे ज़्यादा अबव होना चाहिए. अभी हम मेजरमेंट देखेंगे इस रेड कैंडल को. अभी इसका 50% कहाँ दिखा रहा है? इस रेड लाइन. तो इसका ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग इस रेड लाइन के अबव है, तो ये हमारा एक बुलिश कैंडल है. तो हम इसका क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे लॉन्ग पोजीशन में, और इसका लो पे एसएल रहेगा.
वालेकुम अस्सलाम। इस कैंडल का ओपनिंग पे आपका एंट्री होना चाहिए और इस कैंडल को लो पे आपका एसएल। पहले हम एसएल डिसाइड करेंगे, इसके बाद हमारा टारगेट। अभी मान लो हमारा एसएल कितना पॉइंट का है, 5.5। तो हमारा टारगेट मिनिमम 10, विच मीन्स 1:2। यहाँ पे दिखा रहा ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 और 1:3 और अबो होना चाहिए। विच मीन्स इफ यू आर लूजिंग 1, इफ यू आर रेडी टू लूज 1, यू शुड मेक प्रॉफिट ऑफ 2। मतलब जितना भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसका एक हिस्सा आपका लॉस देने रेडी है, तो आपको उसका डबल या ट्रिपल का आपको प्रॉफिट लेना है, तब तक आपको ट्रेड से निकलना नहीं है। तो उसके हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड में 1:2 का अचीव हो गया है। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये था बीटीसी का। तो इस तरह हम प्रॉपर ट्रेड्स पे एंट्री करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है टारगेट हिट करने का। तो हम बीच में यहाँ कंसोलिडेशन फेज में कहीं एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ करेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा तब। मान लो यहाँ पे हमारा बाइंग था इस लो से इस हाई तक, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए नीचे आया। तो मार्केट रिट्रेस कहाँ तक किया, हमारा गोल्डन रेशियो 0.5 और 0.6 तक किया। तो यहाँ पे हम 1 आवर चार्ट पे देखा था, तो 1 आवर चार्ट पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल देके आप सेलिंग मत करो, छोटे टाइम फ्रेम में आओ, जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट, और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कौन सा बना रहा है। इसमें 5 मिनट कैंडल में आपको क्या बना रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल बना है, और ये कैंडल बुलिश पियर्सिंग कैंडल है। एक और बार समझाता हूँ मैं। जो भी हमें क्या होना चाहिए, पहले एक सेलिंग होना चाहिए, मतलब मार्केट को नीचे आना चाहिए, उसके बाद सपोर्ट लेवल में या रिट्रेसमेंट लेवल में हमें इस तरह का कैंडल बनाना चाहिए। जैसे कि इस लो से इसका क्लोजिंग से ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल इसी के जगह ओपनिंग होना है एग्जैक्टली। और इसका ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जाके है, यहीं से ही ओपनिंग होना चाहिए। और प्रीवियस रेड कैंडल का 50% से अबो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। तो इस कैंडल के 50% से ज़्यादा, विच मीन्स प्रीवियस जितना इस कैंडल में जितना भी सेलर्स थे उनके 50% से ज़्यादा यहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी। ये लॉजिक है। अभी इस कैंडल में जितने भी सेलर्स थे, अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हो गया, उसके 50% से ज़्यादा इस कैंडल में बायर्स एंट्री मार आ गए। तो ऑब्वियसली ये है कि यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट मार्केट बाइंग में ही जाएगा। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस कैंडल के ओपनिंग में होगी, और एसएल इसके नीचे होगा, और टारगेट हमें 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे एग्जिट करना है। और सिमिलरली यहाँ बीटीसी में देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट में ये भी एक अच्छा सेटअप है, बाइंग सेटअप। इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फ। ये मैं आई थिंक ये 4th या 3rd या 4th स्ट्रीम में होगा, मैं लाइव में दिखाया हुआ हूँ आपको। जब भी ऐसा बुलिश एंगल्फ बनता है आप ट्रेड लो बाइंग साइड, लॉन्ग साइड। आपका एसएल इसके नीचे और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। ओके, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। मान लो आपकी एंट्री यहाँ पे है, आपका एसएल इसके नीचे है, आपका टारगेट 1:2 है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब जब भी एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, मार्केट आपका
50% टारगेट ऑलरेडी दे चुका है, आधा टारगेट। तो आपको क्या करना है, आपका एसएल को ट्रेल करके बाइंग प्राइस बनाना है। हम इसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। यू नीड टू ट्रायल योर एसएल टू कॉस्ट टू कॉस्ट। व्हाट हैपेंस इफ मार्केट रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो भी गया तो आपका एसएल कुछ लॉस नहीं होने वाला है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट होंगे, मतलब आपको जीरो लॉस में एग्जिट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एसएल को ट्रेल किया है बाइंग प्राइस पे। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस होने का चांस इधर कुछ भी नहीं रहता। अब यहाँ पे बाई किया, मान लो 109 पे बाई किया, 109.057, नॉट 109.0.5, 109.057, 109 के की एंट्री यहाँ हो गई। अब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आप बाइंग साइड आपने ट्रेड लिया है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाता होगा ना आपको 50% का, मतलब इस ट्रेड का 50%। तो आप क्यों वेट करेंगे कि इसको रिवर्स हो के एसएल हिट करें? तो आप एसएल ट्रायल कर दो आपके बाइंग प्राइस पे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, आपका कुछ नहीं लॉस होगा, 0 रुपीज़ में एग्जिट होंगे। अगर टारगेट हिट हुआ तो 1:2 टारगेट ले लेंगे आप। टी हुआ क्या जीजू? हाँ हो गया सब, टी हो गया, तुम्हारा हुआ? अभी पी लूँ, अच्छी बात अच्छी बात। क्या जल्दी क्लोज करे तुम्हारा शाम में? मैं तुम्हारा वो व्हाट्सएप मैसेज देखने तक बंद हो गया था साहब। सेकेंड मॉनिटर है ना? हाँ मेरा लैपटॉप में मैं कनेक्ट किया हूँ, लैपटॉप में। ಮಾತು ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಆರು 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 तो चैट उधर खोलो। हाँ उधर ही खोला हूँ मैं, चैट उधर ही देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड में 1:3 ऑलमोस्ट ट्रेड हिट ओवर में आने वाला है। बीटीसी अभी 1:1 पे है। जैद का क्या वो आवाज़ करे सो? हाँ अभी वो आए थे नीचे। So BTC 109
310. Let's see if the target hits, or we will exit with cost to cost with no loss. In US tech, you can see a major resistance breaking down. So this was the major resistance in US tech. Now the resistance is breaking. If you see in the 5-minute chart, resistance breakdown, retest and again buying. So here you can plan for 1:2 trade in US tech. So your entry must be at 22,730 and your SL must be at 22,701 and your target 22 almost 800. The reason behind taking this trade is major resistance breakdown, and in 5 minutes with the proper retest we can take the entry. Just a minute.
So as you can see, target hit in BTC, and after hitting the target, what a move. So BTC started pumping. Mr. Gowda, hi bro, can we make profit from small capital? Small capital in the sense, how much? फोटो चेक कर भैया. हाँ फोटो देखा नहीं आज मैं. 10K bro. You can listen to this. First you need to focus on learning. Okay Mr. Gowda. Okay Adil friend. Okay. Brother, you need to learn first. Don't think of profit. Don't think of earning money right now. You should give time to the market. You should understand how it works, how pattern work, how candlesticks work, what are the psychology behind the candlesticks, and you should understand that. Then you should start to think about earning or making profits. So initially if you come to the market by thinking to make profit, definitely you are going to lose everything. It will take time, but you need to learn, you need to get proper knowledge how it works, what are the psychology behind these candles. Bro, please make easy understanding videos. For that, we need to enroll to my class. I will teach you from basic to advanced. And by watching videos you cannot learn, because everything you cannot learn through YouTube videos, because there are thousands of videos in YouTube available. So if you are interested to learn this, I have given the link of Exness below. That is only for Forex. You can download that. They will give you a demo of $10,000. You can practice with that. To make practice, you should learn how to trade and what are the things you need to check before taking a trade. What should be your volume, what should be your quantity, lot size, everything you need to check. See, 1:3 target done in BTC, and still we are seeing buying. If you have taken trade here, you would have get good profit. If you are having profit, you can exit the positions, because almost our target done. In gold also our target done. As you can see, we entered here with the proper logic, and our 1:3. You can see the risk to reward ratio 3. Exactly our target hit in gold also. So we have given 2 trades today, that is in BTC and in gold. Both the target hit. Okay, in US tech also almost
the trade near our target, you can rewind this stream. Before 15 minutes had given this trade exactly entry here, and you can see almost this third trade also hitting the target. Just I think 10 points more. So if you are taken trade here, you can trial your SL to cost, so that you will not face any losses. Now your capital is safe, you are running with profit, and there is no risk of trade. If the target hits, it's okay, but don't exit in the middle. जेनी कुन, उफ, बड़े दिन बाद चार्ट्स देख रहा हूँ. So in US Tech, our trailing SL will be hit soon if it reaches to 22,732. If you would have booked at 1:1 also, not issue. Okay, see, this is the use of trailing or SL. If market reverses before your target also, you are exiting without any losses. So you entered here, your SL was below this candle. If you would have exited here, okay, no issues. But if you have holded this trade, and if you have trailed this SL to cost, if the market reverses from this level also, you are exiting with zero loss, because you have trailed your SL to cost. So that's why trailing is important whenever you take trade. Which strategy you use, brother? Brother, I don't have any strategy, I just use price action. And the logic behind taking trades, and I have explained. Our target hitting in today's stream, our gold target hit, BTC target done, and in US Tech we exited with cost to cost, because we entered here, our SL was below this. Almost we just left out with 10-12 points in US Tech, but market unfortunately reversed from here. Our trailing SL hit, where our SL was trailed to cost to cost. So here this was no loss. Here we made 1:3, and in BTC also we made 1:3, more than that. डेली ट्रेड करते हो? हाँ भाई, डेली ट्रेड करते हैं और डेली स्ट्रीम भी करते हैं.
Rashekar sir, we hit gold trade target also. Yes, yes, this was a perfect entry, correct. Subscribe to this channel and share with your friends who are interested to learn. In US oil, we can see market is taking retracement from point 0.6 level. So this is the multiple rejection we can say. If you look at lower time frame, see this is multiple rejection. So here you can take a small risk. The logic behind this is US oil taking rejection from this 0.6 level, and also there is a resistance here which can convert resistance into support. So if you had entered here, your target would be 67.12 and your result is 67. So this is our fresh trade in US oil. ग्रुप में आपका BTC का पिक देखकर आया लाइव देखने. ओके भाई, थैंक यू. आई थिंक कौन सा ग्रुप है, स्टॉक्स वो वाला ग्रुप है या वो ट्रेड अपडेट्स है ना वो ग्रुप है? So here we gave our SL. This was very small SL. स्टॉक्स वाला. ओके ओके, जेनीकुन भाई आपका नेम ही जेनीकुन है या ऐसा गेमिंग नेम रखा है? Okay, somebody asked me about Doge few days back. I don't know that person name. He asked me about Doge and I had told him that you can enter because now Doge was not now. At that day Doge was at bottom and we can see a good moment in Doge has started, almost 12% from bottom. Okay, okay, gaming name. Nice, bro, nice.
US30. Now US30 is trading around this resistance. So here you can see here now still the resistance has not properly covered. अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो चांस हो सकता है. पहला चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बना के यहाँ पे एम पैटर्न बना सकता है. ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेट होगा क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा. जो यहाँ से नीचे से आए ये बायर्स भी रहेंगे और यहाँ पे रेसिस्टेंस से यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे. तो थोड़े देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और जिस जगह पे ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा विथ प्रॉपर टेस्ट, ऊपर हम एक मोमेंटम देख सकते हैं. अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखेगा जैसे कि बियरिश एंगल होगा या एम पैटर्न, प्रॉपर एम पैटर्न, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल भी देख सकते हैं US30 पे. जनी कौन भाई और कोई आपके फ्रेंड्स है जो इंटरेस्टेड है लर्निंग में सीखना चाहते हैं, तो उनको मेरा चैनल आप शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. और डेली लाइव में भी आप सीख सकते हो. और आपको बेसिक्स टू एडवांस सीखना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी हो, उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो. GBP USD ट्रेड नहीं करता हूँ भाई, लेकिन रेगुलरली तो मैं फोकस करता हूँ गोल्ड पे और BTC. अभी कभी कभी US30 US में भी कुछ अच्छा मोमेंट मिला तो करेंसी पे थोड़ा कम करता हूँ मैं, क्योंकि जिस एसेट पे आप एवरीडे एनालाइज करते हो उस पर आपका थोड़ा ग्रिप रहता है और आपको एक आइडिया आता है कि मोमेंटम कैसे आ सकता है. आप बहुत सारे एसेट्स पे आप ट्रेड करना चालू करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप 2 या 3, मेरे हिसाब से 2 या 3 एसेट्स पे आप पूरा फोकस करो और एवरीडे एनालाइज करो तो आपका एक ग्रिप बैठेगा. तो इस हिसाब से मैं BTC और गोल्ड में ही ज़्यादातर मेरा ट्रेड्स रहता है और रेयरली US30 और US टेक, इसमें बहुत कम करता हूँ. गोल्ड वेरी डेंजरस. नहीं भाई, मेरे को गोल्ड बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक गोल्ड में ही अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है कंपैरेटिव BTC और निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी होगा. सो मुझे गोल्ड पे ही अच्छा प्राइस एक्शन लगता है. तो BTC में आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है बाइंग. क्या एंट्री थी हमारी BTC में, एग्जैक्ट 5 मिनट के चार्ट आप देख सकते हो. इस स्ट्रीम के स्टार्टिंग में हमने इस बुलिश एंगल्फ कैंडल से हमने कंफर्मेशन से और इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड एक पंच किया था और यहाँ पर देख सकते हो हमारा टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट ने कितना अच्छा बड़ा मोमेंटम दिया है. मैं गोल्ड में एक बार बिना SL के ट्रेड किया, न्यूज़ के दिन अकाउंट ब्लो हो गया. भाई कभी भी आप बिना SL के ट्रेड मत करो, क्योंकि क्या होता है कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है कि, और आप यूजुअली ट्रेड करेंगे तो आप
ऑब्वियसली लेवरेज के साथ ट्रेड करते होंगे, लेवरेज के साथ आप ट्रेड करेंगे तो वो लिक्विडेशन में आपका इशू आके अकाउंट ब्लो हो जाता है, एक कैंडल बस, एक कैंडल में आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता है। तो आप क्या करो, जैसे ही ट्रेड पंच करते हो आप डायरेक्टली डबल टैप करके पहले एसएल को रखो, उसके बाद आप टीपी का सोचो। पहले ट्रेड पंच किया, एसएल फिक्स कर लो, उसके बाद टीपी का सोचो। क्योंकि और मैं बोलता हूँ आप अगर बिगिनर हो तो न्यूज़ ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि न्यूज़ ट्रेड में बहुत ट्रैपिंग होता है। जैसे कि मान लो कोई न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ ही है, लेकिन पहला आपको इतना बड़ा रेड कैंडल दिखेगा तो आप सोचोगे कि मैं न्यूज़ में कुछ गड़बड़ है, शॉर्ट की तरफ हम ट्रेड लेंगे, तो पीछे इमीडिएटली उसके रिवर्सल में उससे भी ज़्यादा आपको एक रिवर्सल ट्रेड मिल जाएगा, रिवर्सल कैंडल बन जाएगी। तो इस तरह का ट्रैपिंग होता है न्यूज़ ट्रेड पे। अगर बिगिनर हो तो अवॉइड करो, बेटर है नॉर्मल टाइम में जब मार्केट शांत रहता है उसी टाइम पे आप ट्रेड करो आराम से। व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इन यूएस टेक, एनी गेसेस? सर वी कैनॉट गेस इन दिस मार्केट, वी कैन एनालाइज इट, लेट अस चेक यूएस टेक ऑल टाइम हाई। So in US Tech, our target hit by hitting our trailing SL. Sir, you don't ever guess any targets or any prices. There is no guess. We can guess only in gambling. Here we need to analyze as per price action. So if you look at one day chart, you are seeing, but there is no proper confirmation. So to analyze all time high or what will be the next price, what you need to do, you need to go for higher time frame like 1 month. So in 1 month you can see this is our price action in US Tech, and if I draw a trend line from this higher highs, let us see where it will reach. This is our trend line, and if you see that market is in uptrend, we'll draw it, okay, from this low to this high, from this low to this high, and again this low, and it is moving towards the next high. So let us understand where the US Tech will reach. Okay, we should not guess, we should analyze. Okay, now you can see here, this is our impulsive, this move is impulsive, and this is our retracement, impulsive retracement. The next impulsive we need to find out. Okay, and if you take this fib and if you draw, you can see exactly from our 0.5 and 6 the market started reversing. Okay, now how we can see the target? You see what is the length of this impulsive move, 10,369, almost 10,370. After this retracement, this impulsive move, how much? 11,400. So on an average, after a retracement, it is taking 10 to 11,000 points impulsive. So from this low, you can expect 10 to 11,000 points. So let us take, okay, somewhere here, 11. Let us take this 10,000. So in this way, you need to find the next targets. Okay, so almost we can expect 27 to 28,000. Our next all-time high. I hope this is cleared. If you are watching, sir, please write down understood or not in the chat box so that I can confirm you understood this concept or not.
Okay, sir. Thank you. So our next target in USD would be 27,000, around 27,000. So now it is trading around 23,000 almost. But you can see there is a good buying, but we cannot directly expect a straight movement till 27,000. Okay, we cannot expect directly like this. The market will move higher highs, higher highs, higher highs, then it will reach to this target. So in between you can see the small retracements or small corrections. How not to get trapped in liquidity zone? Can you explain with example? So we cannot explain this with example because there are so much liquidity and it depends upon your entry. If your entry is correct, then you will not trap. You will not get trapped. If your entry is wrong, then obviously you will get trapped. But there is so much liquidity. But how can I give example? Like, now this is our liquidity, and if you have entered here call or put somewhere here, you will get trapped. See, this is our liquidity. Okay, in this liquidity zone, if you have taken trade on the basis of candlesticks only without looking at the logic or the psychology behind the candles or patterns, if you directly taken trade, what is this? Bullish engulf. So what is this bullish engulf? Within 3 candles you are SL it. Okay, this low it already SL it. Why? Because there is no liquidity, because already the buying there is a continuous buying here. Whenever there is a continuously buying, the market will not immediately take retracement and move upside. It will grab liquidity of buyers and sellers. So this is the liquidity which I have marked right now. So in this way you will get trapped. So avoid taking trades in these liquidity zones. And if you want to enter the trades and retracement, you should wait for 0.5, 0.6 instead of 0.2, 0.3, because the accuracy will be more on 0.5 and 0.6. See, if you take this retracement from candle closing of this low to high, see here the bullish engulf was formed in 0.3 level. So this is not a we can say good retracement, because the accuracy of this retracement is very less. The market will retrace from this level, but our accuracy will be more at 0.5 and 0.6 zone. So if you see this bullish engulf or any bullish candles, you can take trade. Okay, this is our golden zone, golden retracement. This is our 0.3 retracement. Okay, now I will delete this fib and I will make you understand the accuracy of retracements. See, this is our liquidity zone. After this buying, this is our 0.3 retracement. In 0.3 retracement, if you
took trade on the basis of this bullish angle, you are trapped. If you waited for this golden ratio, that is 0.5, 0.6 level, and if you had entered here also, you would have a good trade. If you entered here also, you would have good trade.
Hello. Arun. Okay, that's it for today. I'm closing the session, and thank you so much for watching. Keep supporting, subscribe, and like this stream. Thanks for watching.